कम बजट की फिल्म फिर नहीं करूंगी। अच्छे एक्टर्स ऐसा नहीं अगर आपको पता है कि नेक्स्ट डे आप एक इम्प्रोव सेट पर जाने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको सिचुएशंस तो पता होती ही होंगी कि अच्छा हमको इसके ऊपर इम्प्रोव करना है, नॉट प्लानिंग द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, स्पेशली फॉर दिस सीन वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो इस सीन के लिए कुछ ऐसा घर से एक्स्ट्रा प्रेप करी थी या ऐसा वो चैनलाइज कर देते ना इनर एंगर भी कई बार, तुमने मुझे ये बोला ना मैं तुमको कैमरे पे दिखाऊंगी। वैसे तो मतलब अच्छे एक्टर्स ऐसा नहीं गुड आंसर। इम्प्रोव का मतलब ये है कि आप एक प्री प्लान इमोशन के साथ तो बिल्कुल ही ना है, मतलब बिकॉज दैट इज द डेथ ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। You have to come with a motivation of what you want from this scene, and that Karan used to tell me for Rasika and tell Mukul for Mohit, and often tell us separately, because in any scene is interesting to watch if there is conflict. That means that two people want different things or want it differently. There is some point of conflict. So if I already know what he wants and he already knows what I want, then there is no conflict left. So and in life when we meet people in conflict situations, that's what happens. That you're sort of, you don't know how to respond to it, or you're wondering what to do. And if we had planned anything, or definitely planned an emotion, which I think in not forget improv, I don't think in any acting situation you should do that. That's not good acting in my books at least. Brilliant. मुकुल, कितने सारे disagreements होते थे सेट पर? बिल्कुल नहीं, actually this is we didn't have, and I'm not saying it कि मतलब अरे we get along so well and नहीं I'm not saying नहीं, क्योंकि ये process ही ऐसा था actually। रसिका ने एक बहुत अच्छी बात कही है that you know जो प्री प्लानिंग द नेक्स्ट डे कि क्या आपका क्या करने वाले हैं, ट्राइंग टू से कि मैं दिखा दूंगी आपको या यू नो व्हाटएवर, और ट्राइंग टू स्टीयर द सीन इन सम वे, ये एक्चुअली जैसे रसिका ने कहा है इट शुड नॉट हैपन इन इवन इन अ स्क्रिप्टेड मूवी, बट कभी कभी होता है, वेरी ऑनेस्टली। गुड एक्टर्स डोंट डू बट मेनी पीपल डू। फॉर्चुनेटली इस फिल्म में उसकी गुंजाइश थी ही नहीं, बिकॉज यू कैनॉट, and I think in that sense it's also a good training to teach you really how to just give up control, trying to have control, and आप अपना काम संभालो। I had done a film with Karan 10 years before this, 2011 में हमने एक बहुत ही independent, इससे भी ज्यादा independent film की थी, क्षय। So we already had a working relationship in place, and I felt very comfortable in the setup, and which is one of the reasons I said yes to this film also, because मुझे पता था कि करण के साथ जो भी डिसएग्रीमेंट्स होंगी वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे झगड़ा करके। हाँ, वो हमने क्षय के वक्त भी किया था और इस पे भी किया कि आई डोंट फील लाइक आई हैव टू पैकेज something that I have to say to him. I can just say it how I feel it, you know. So that kind of comfort level was there. One thing which you took back after when you shot the entire film, which has never happened with you till now, जितना भी आप लोगों ने अब तक काम किया, one different kind of experience which shook you up a bit after doing this movie. कम बजट की फिल्म फिर नहीं करूंगी। कई बार ये गलती कर चुकी हूँ। मैंने इससे पहले बहुत इम्प्रूव किया है, हम दोनों ने किया है, बट स्ट्रेंजली आई थिंक दिस होल थिंग अबाउट लेटिंग गो जो मैं कह रहा था, एंड रियली नॉट एंड लेटिंग गो ऑफ ऑल कंट्रोल, आई थिंक इट एक्चुअली इवन हेल्प मी इन रेगुलर इम्प्रूव, यू नो, बिकॉज हम कहते हैं दीज ऑल नोन थिंग्स इवन इन स्क्रिप्टेड स्टफ कि आप कंट्रोल ना करें। इम्प्रूव में भी देयर इज अ थिंग वी से दैट इज, यू नो, डिस्कवर डोंट इन्वेंट, यू नो, लेट द सीन, डिस्कवर अ सीन एज यू गो थ्रू, डोंट इन्वेंट। ये सब रूल्स पता है हमें, और उससे पहले भी काफी सालों से मैं कर रहा था इम्प्रोव। एक्चुअली आई रियली हैव टू से दैट इट वाज अ गुड लेसन टू रियली एक्सरसाइज दैट कंट्रोल, and you know, or not having control, you know, it's like not having control. I understood. Yeah. So you know, when you decide to like, you know, produce a project, जी. आप उसकी डेप्थ में जाते हो, आप देखते हो कि अच्छा क्या रिसर्च है, क्या इसका पूरा प्लान है, स्ट्रक्चर है,